Now we'll discuss about the Adams-Basforth method. Adams-Basforth method क्या है actually? Adams-Basforth method. ये जो मेथड है बेसिकली इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसके गिवन कंडीशन होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to function of xy. y0 which represent y of x0. This is initial conditions and some points to be evaluated for these conditions. Some points to be evaluated means यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा? Some points to be evaluated here. The first order differential equation है with initial condition is also there and some points to be evaluated. Some points. तो इसी पॉइंट है y-1 हम इवेलुएट करेंगे एंड हाउ टू इवेलुएट दिस वैल्यू ना y ऑफ x0 minus h. y-2 एक इवेलुएट करेंगे दैट इज y ऑफ x0 minus 2h. y-3 एक इवेलुएट करेंगे एंड दैट इज क्या होगा y minus 3h. y x0 minus 3h. तो ये बैकवर्ड डिफरेंस में कैलकुलेशन होगा y-1 y-2 y-3. ये 3 मेथड्स हम यूज करेंगे y1. फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा f-1 f-2 f-3 by any one of the method. f-1 calculation करेंगे. तो what is the procedure of f-1? That is f x0 minus h comma y-1 because y-1 already evaluated from this. f-2 that is also x0 minus 2h. f x0 minus 2h y-2 and f-3 and that is f x0 minus of 3h y-3. These are the points to evaluate. y-1 y-2 y-3 f-1 f-2 f-3 you can evaluate from the first order linear differential equations. So how to evaluate it actually? इसको हम और कैसे evaluate कर सकते हैं? So just to find y1 value by using the Newton's backward interpolation, we can evaluate the y1 value and just use Newton's backward interpolation. Newton's backward interpolations. The Newton's backward interpolation को हम यूज करेंगे and y1 value को हम evaluate करेंगे. तो एक्चुअली फंक्शन जो है यहाँ पे f of xy और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको हम कैसे बैकवर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे? f0 n into बैकवर्ड del f0 plus n into n plus 1 by 2 into del square f0 n plus delta. This is the function by backward Newton interpolation formula. And for evaluating the y1, how to evaluate this y1? Just of y0 plus integration of this value, integration of f of xy into dx. This function को हम integration करेंगे, just limiting value x0 to x0 plus a n h
x0 to x0 plus of nh. This is the limiting value and we have to interpret this process. तो कैसे करेंगे? Now integrate this function by substituting method. When all the data here substitute here y1 को evaluate करेंगे. y0 has already given initial condition and x0 this is the given and x0 plus nh also out f0 plus n into backward difference f0 plus n into n plus 1 by 2 into backward square f0 plus this into daily term. This is the function of this function and that is dx we can represent, and just we substitute x0 plus nh is equal to x0 plus nh which is equal to x, then you put x equal to x0. जब ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो इनिशियली कंडीशन we put just initial condition here x0 plus nh then x equal to x0 because x is equal to x0 you have to put here. Then what is the value? यहाँ पे dx की तो dn is equal to dx. इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं with respect to derivative of this function. So h dn is equal to h dx. So अभी लिमिटिंग अभी जो dx वैल्यू को हम इंटरचेंज करते हैं that is h into dn हो जाएगा. यहाँ पे h into dn डालेंगे and x लिमिटिंग भी चेंज कर देंगे. इस लिमिटिंग वैल्यू एंड ये लिमिटिंग वैल्यू को हम चेंज करेंगे. ये लिमिटिंग x0 है तो x0 डाल दिया तो व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू n nh is equal to 0 हो जाएगा तो n equal to 0 हो जाएगा. This is when x0 लिमिटिंग वैल्यू x0 है तो उसी टाइम में लिमिटिंग वैल्यू n equal to 0. जब x का x0 हो जाता है तो n का लिमिटिंग वैल्यू उसी टाइम में 0. अपर लिमिट x0 plus nh that is x का वैल्यू n x0 plus nh डालेंगे तो n is equal to 1 आ जाएगा. So that is 0 to 1. Then n is equal to 1 आ जाएगा. Now you can just substitute the limiting value here. All these functions y1 में हम यहाँ पे डाल देते हैं y0 plus limiting value 0 to 1 and जो function given था f0 plus n del f0 plus n into n plus 1 by 2 into del square f0 plus that this function ये जो function है उसको n रेस्पेक्ट में करेंगे h को बाहर ले जाएंगे. ये इंटीग्रेशन करने के बाद एक वैल्यू आएगा. After solution of this function we have got y1p पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम करते हैं. यहाँ पे y1p आएगा प्रेडिक्टर वैल्यूज Adams Basforth method and that value becomes y0 plus h by 24 55 f0 minus 59 f minus 1 plus 37 f minus 2 37 f minus 2 minus 9 f minus 3. This value we found here, but this is the predictor value we are getting for Adams Basforth method, and this one is called as the predictor formula for Adams Basforth method. This is the predictor for Adams Basforth method. Now we calculate the corrector of this function. तो हमको क्या करेगा ना, करेक्टर करने के लिए हमको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. That is f1 मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा. f1 कैसे? Now that is function f(x0) plus h1 comma y1.
यहाँ पे जो y1 तुम evaluate किए हैं, you can just put in this function and you can evaluate the f1 value. Predictor में जो y1 का वैल्यू हम evaluate किए हैं, that just substitute in f1 value, then we got the f1 value. And just coming to discuss that f1, then y1c character formula can be expressed y0 plus h by 24 and 9f1 plus 19f0 minus 5f minus 1 plus f minus 2. ये जो फॉर्मूला आ गया, दैट इज Adams Moulton character formula. This is called Adams Moulton character formula. ये हो जाएगा Adams Moulton character formula. So this is actually Adams Basforth predictor formula में what are the basic concept you know to evaluate the solution of the problem. तो first of all ये given होगा तुमको, इन concept में हमको given होगा dy by dx is given, first condition में ये given होगा जो कि f of x y. सर थोड़ा पर हाँ ओके. So just we can revise the concept. हमको actually what we need to calculate this value. ना ये मुझे given है with condition y of x0 is equal to y0. उसके बाद हमको three things चाहिए, y minus 1 चाहिए, y minus 2 चाहिए, y minus 3 चाहिए. This three part, this one part, and इसके हिसाब से हम फिर f minus 1 चाहिए, f minus 2 चाहिए, f minus 3 चाहिए. This calculation के लिए ये y1 is related, ये calculation के लिए ये is related, and f3 calculation के लिए ये भी is related. And just evaluate this value. After that क्या होगा ना, हमको predictor के हिसाब से यूज करेंगे. तो predictor का फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, y1 फर्स्ट इटरेशन हम कैलकुलेशन करेंगे. That's why you can say that y1 फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेशन करेंगे, तो दैट यू कैन सी द y1. तो y1p हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रेडिक्टर. तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला डालेंगे ना, y0 प्लस h by 24 and this value 55f0 minus 59f1 f minus 1 37 plus 37f minus 2 and minus 9 f minus 3. This ये प्रेडिक्टर वैल्यू आ गया क्योंकि यहाँ पे जितना हम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेशन किए, देखो f0 जो है दैट यू हैव टू कैलकुलेटेड हियर. f0 वैल्यू हमको इनिशियली गिवन होगा, f0 वैल्यू इज इनिशियली गिवन, f minus 1 ऑलरेडी इवैल्यूएटेड यहाँ पे, f minus 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, f minus 3 ऑल्सो यहाँ पे है. और दो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये प्रेडिक्टर वैल्यू आ जाएगा. एंड इस मेथड को हम क्या कहते हैं ना, आदम्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला. आदम्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला कहते हैं. तो आदम्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला जो है, अभी करेक्टर फॉर्मूला लेके आदम्स मोल्टन करेक्टर जो कहते हैं, तो ये वैल्यू हम यूज करना पड़ेगा. हमको f1 यहाँ पे निकालना पड़ेगा. f1 का फॉर्मूला x0 प्लस h कॉमा y1, ये जो वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ पे हम f1 कैलकुलेशन करेंगे. ये यूज करना पड़ेगा कहाँ पे ना, y1c में करेक्टर फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा. तो करेक्टर फॉर्मूला क्या है ना, y0 प्लस h by 24, उसके बाद क्या आ जाएगा 9f1 plus 19f0
minus 5f minus 1 minus plus f minus 2, ये सब वैल्यू आ गया यहाँ पे. These are the value f1, f0, f minus 1, f minus 2. You have to just arrange this value. This f1 we utilized here, and this formula is called Adams-Moulton character formula. Adams-Moulton character formula. वो 19F0 है ना या 9F0 है? 19F0, 9F0, 19F0. ऊपर आई थिंक 9 लिखे थे. 9 लिखे ऊपर में. ओहो 9 लिखा है. 19F0, राइट. 19F0. So this is Adams-Moulton character formula. तो हम just one example करेंगे तो you have to understood better. अच्छा, everyone know the Adams-Moulton formula में dy by dx इसका डाटा है. देखो वन एग्जांपल जस्ट हम करते हैं यहाँ पे. dy by dx is equal to x square whole into 1 plus y, एंड कुछ कंडीशन है y1 is equal to 1, y1.1 is equal to 1.233, y1.2 is equal to 1.548, y1.3 is equal to 1.979. मुझे y1.4 चाहिए. दैट मीन्स x का वैल्यू जो 4 होगा तो हम y इसका वैल्यू कितना आएगा उस टेबल में. So just you see, this is a function, but this is also called the f of xy. ये f of xy होगा. x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है, हम यहाँ पे देख लेते हैं. x का वैल्यू हम अभी नेमिंग करते हैं. वन पॉइंट जीरो. x का और एक वैल्यू है 1.1, x का और एक वैल्यू है 1.2, x का और एक वैल्यू है 1.3. These are the values of x. X का वैल्यू we can define here. तो y minus 3 यहाँ पे एक वैल्यू आएगा. This is x minus 3 कहते हैं, और y minus 3 that is this is a value representation. Y minus 3 which is equal to 1 point, and y minus 2 1.233, this value 1.233, and y minus 3 1.548. Then this next value y0, this is y minus 3 minus 2 minus 1, and this is y0, and this is x0 हम करेंगे. y0 is equal to 1.3 means 1.979. This is the value, and just you need to calculate some value
f वैल्यू हम कैलकुलेशन f-3 कैलकुलेशन करेंगे by using this formula. You have to utilize this formula and you have to calculate the f-3. F-3, that means just you put here x value 1.0 and y value this one, you substitute in this equation. तो f-3 यहाँ पे डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1.0 स्क्वायर 1.0 स्क्वायर into 1 plus 1 this is function. इसका वैल्यू आ जाएगा 2.0. Similar procedure we have got f-2. तो ये वैल्यू 1.1 स्क्वायर यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर 1 plus 1.233. तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.702. ये वैल्यू आ जाएगा दिस वैल्यू f-2 ये वैल्यू आ जाएगा f-2 f-1 आ जाएगा f-1 1.2 का ये स्क्वायर होल इनटू 1 प्लस 1.548. इसका एक वैल्यू आ जाएगा दैट इज 3.669. 3.669. फिर f0 भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो दैट इज 1.3 का स्क्वायर होल इनटू 1 प्लस 1.979 कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 979. 979 में कितना वैल्यू आ जाएगा 5.035. So these are the calculated value. We apply the predictors Adams-Basforth method and corrector Adams-Basforth method to evaluate this pattern. हम क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्रेडिक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. y1p y1 तो p नहीं होगा y1p यहाँ पे लिखेंगे y1p. तो व्हाट इज द वैल्यू y1p? y1p आ जाएगा y0 plus h by 24 55 f0 minus 59 f-1 plus 37 f-2 minus 9 f-3. These are the value. ये सब वैल्यू गिवन है यहाँ पे f0 तो ऑलरेडी इवैल्यूएटेड किए हुए यहाँ पे f0 f-1 f-2 f-3 just to substitute in this equation यहाँ पे डाल देंगे. After substitute this value, substitute करने के बाद जो वैल्यू आएगा just look out what is the results of this polynomial. Now this is the value here 2.573. That is y1 predictor value when arcs is equal to 1.4. तो y1p वैल्यू आ गया predictor value. Now for calculation of the predictor value we need the f1. f1c पहले हम कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे by using this formula. f1c function x minus f माइनस क्या हो जाएगा जो वैल्यू है यहाँ पे h का वैल्यू तो 1.1 है देखो 1.0 1.1 1.2 1.3 इसका जो डिफरेंस वैल्यू आता है दैट इज h 1.1 minus 1.0 that is 0.1 is the h value here. So that you can just see f1 you have to calculate that is h comma y1 यहाँ पे f1 वैल्यू आ जाएगा and that f1 वैल्यू becomes हो जाएगा 7.004 आ जाएगा.
So now you have to apply the corrector formula. Corrector formula y1c. This is the corrector formula, and that is a y0 means 1.979 plus h by 24, and जो वैल्यू है यहाँ पे डाल देंगे, that formula 9f1 minus 19f0 plus 19f0 minus सर वो ये थोड़ा कैसा है सर? 7.004 7.004। हाँ वो ठीक है। ये कैसा आया? यस सर। अभी x0 प्लस h था जो हम प्रेडिक्टर के लिए जो फॉर्मूला दिए थे, उसका फॉर्मूला क्या था प्रेडिक्टर के लिए? x0 प्लस h1 था, ठीक है। x0 प्लस h, x0 स्टार्टिंग में कितना वैल्यू था यहाँ पे फंक्शन में? x0 का स्टार्टिंग वैल्यू कितना है? 1.3। यस सर। 1.3 प्लस 0.1 तो कितना है? 1.3 प्लस 0.1 तो 1.4 आ जाएगा। एंड y1 वैल्यू आ गया कहते हैं 2.573, ये वैल्यू आ गया। ये x के जगह में डालेंगे, ये y के जगह में डाल देते हैं। तो हमारा जो फंक्शन गिवन था, क्या फंक्शन था? x स्क्वायर इंटू 1 माइनस y, 1 प्लस y, यही था ना? दिस इज ए फंक्शन था। अच्छा यहाँ पे हम डाल दीजिए x इक्वल 1.4 स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू, कितना था ये देखो, 1.4 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1.2, 1 प्लस 2.573, कितना आएगा? आ गया सर, 7.003 आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो दैट इज बाउंड्री, ये वैल्यू हम पुट करेंगे बिकॉज़ x0 प्लस h जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो f1 वैल्यू आ गया, दिस f1 वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे, करेक्टर फॉर्मूला में अभी यूज कर देते हैं। तो करेक्टर फॉर्मूला में डाल देंगे तो कितना आ जाता है ना, 9f1 माइनस 19f0 माइनस 5f माइनस 1 प्लस f माइनस 2, ये जो वैल्यू है यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये जितना वैल्यू यहाँ पे अभी तो ऑलरेडी f1 हम एवलुएट किए हैं, दिस इज f1, यहाँ पे डाल देते हैं f1 का वैल्यू। f0 वैल्यू पहले से एवलुएटेड है, f माइनस 1 भी एवलुएटेड है, f माइनस 2 भी एवलुएटेड है। ये सब वैल्यू यहाँ पे डालने के बाद एक सॉल्यूशन आएगा। f1 f0 तो यहाँ पे गिवन है, f0 5.035 गिवन है, f माइनस 1 3.669 गिवन है, ये सब वैल्यू गिवन है यहाँ पे। So after substituting this equation, then you got one solution that is 2.575. 2.575 वैल्यू मुझे मिलेगा यहाँ पे y1 का वैल्यू। Yes sir. So this is our solution actually. This is called the formula of the Adams-Basforth method for ये मोल्टन्स फॉर्मूला है, आदम्स मोल्टन फॉर्मूला में ये सॉल्यूशन है, वो आदम्स प्रेडिक्टर फॉर्मूला। सर y का जो 1.4 निकालने के लिए बोला था, तो वो 1.4 किधर यूज नहीं करना है ना, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, निकालेंगे वो तो तो आंसर आ गिवन है। जाएगा ना। हाँ, x का वैल्यू तो गिवन है, हमको y का वैल्यू चाहिए। x वैल्यू 1.4 हमको दिया गया है बिकॉज यहाँ पे लास्ट था कितना, 1.3 था, इसका लास्ट कितना था 1.3 था, उसके h है 1.2। यहाँ पे सब देखेंगे तो उसका गैप कितना आता है, ये दोनों में जो गैप है दैट इज h 0.1, ये दोनों में जितना है तो 1.0.1, ये दोनों में भी कितना 0.1, ये दिस इज h वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप होगा तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो कितना आ जाता है, दैट x0 उसका x1 आ जाएगा, दैट इज 1.4 मोस्टली आएगा, और एक स्टेप करेंगे तो दिस इज x4 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे x1 हो गया, मतलब यहाँ पे और एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे इसके भी एक वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो ये मुझे इसके लिए ये होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा कैलकुलेशन करने के बाद, इस वैल्यू के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे।
दैट्स वाई ये जो मेथड हम यूज करते हैं तो y का दो वैल्यू आएगा, एक प्रेडिक्टर एक करेक्टर वैल्यू आएगा आदम्स बास्फोर्थ मेथड। इसीलिए आदम बास्फोर्थ मेथड जब यूज करते हैं तो एक प्रेडिक्टर वैल्यू हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद f1 वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद करेक्टर फॉर्मूला में ये वैल्यू डालते हैं, देन वी गॉट द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। डाउट और क्लियर हो गया? क्लियर सर। ओके, तो ये आदम्स बास्फोर्थ मेथड था, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मिलनेस मेथड तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर दिए थे, फिर बोलेंगे तो फिर एक बार डिस्कशन कर देंगे, नहीं तो मिलनेस मेथड भी सेम प्रोसेस है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इनिशियल वैल्यू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे f0 f1 f2 f3 कैलकुलेशन करते हैं, y1 y2 y3 कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद उसका जो वैल्यू फॉर्मूला ही डिफरेंट है और कुछ नहीं है। वहां पे प्रेडिक्टर निकलना है, यहाँ पे भी करेक्टर निकलना है बाय यूजिंग द मिलनेस मेथड। इतना ही था तुम्हारे यूनिट 3 में। फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर करेंगे तो हम एक जनरल फॉर्मूला डाल देंगे तो उसका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर मिल जाएगा। आई के जगह में जो यहाँ पे 1 0 रखेंगे तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, ये 1 0 आ जाएगा तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। फिर और एक ऑर्डर इंक्रीज कर देते हैं तो ये आ जाएगा थर्ड ऑर्डर, ये दिस इज द फोर्थ ऑर्डर। तो ये था तुम्हारा यूनिट 3 का मिलनेस मेथड में। फिर प्रॉब्लम करेंगे ना, हो जाएगा वो ऑलरेडी कर दिए थे। ये सर हो गए। ओके अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज इतना करो, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। कल क्लास है ना तुम्हारा? 2:30 में क्लास है ना? यस सर। हाँ, कल तुम्हारे तो जनरल क्लास है, वो उसके हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, उसको भी कल खत्म कर देंगे। यूनिट 4 भी खत्म हो जाएगा कल सैटरडे के तक, हम यूनिट 5 भी खत्म कर देंगे। ओके, तो इतने करो। Thank you. Next, we will discuss